वेलकम टू ओडिशा ऑल टेक यूट्यूब चैनल। जदि आपण आम चैनल को प्रथम आछंती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो देखो गोटे गुरुत्वपूर्ण आम राय आसी माननीय सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय जो अवसरप्राप्त कर्मचारी को आम कहीपर गोटे खुशी खबर। दयाकोरी वीडियोटी को शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय जानीपर। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा आज खबरटी। देखो माननीय सुप्रीमकोर्ट ये कहते जो रही माननीय सुप्रीमकोर्ट कहते कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रेंडर प्रायर टू रेगुलराइजेशन अर्थात कर्मचारी जन रेगुलर हवा पूर्व जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड अच्छी सर्विस टू बी काउंटेड फॉर पेमेंट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट ताले कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस को काउंट करा ना पेंशन बेनिफिट से माननीय सुप्रीमकोर्ट राय कहते The Supreme Court partly allowed an appeal against the High Court decision जोटा कि होता which denied pension to employee for the period of their contractual service even after they were regularized। ताहले एटी जो जणु कर्मचारी जणु को दिया जाय नथिला कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस को काउंट करा नथिला पेंशन पई। एटी माननीय सुप्रीम कोर्ट तांको राय रे कहिसेंती द कोर्ट देयरफॉर हेल्ड दैट रूल 70 जो रहिछि अप्लाई वन्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई was regularized. Upon regularization, the pension rule apply and Rule 70 provide that past service as a contractual employee be considered for calculating pension बोली एटी गुरुत्वपूर्ण राय देछंती। Subsequently, the court order with above reasoning and direction we partly allowed the present appeal set aside impugned order of High Court ro order को एटी कार्यकारी करने को मना करथिले। एटी देखिबा जो गुरुत्वपूर्ण राय रेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते तो सुप्रीम कोर्ट रेफर टू रूल 70 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल जो रही 1972 अनुसार व्हिच डील्स विथ द काउंटिंग सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर पेंशन पर्पज रे आमको कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस पीरियड को काउंट करा जिवो। द बेंच नोटेड बिफोर कमेंसिंग आवर एनालिसिस इट इज नेसेसरी टू नोट द स्कोप ऑफ द प्रेयर मेड बिफोर कैट एंड हाई कोर्ट बिफोर दिस कोर्ट। The prayer before the CAT is for regularization with respective effect, retrospective effect, protection of pay, and grant of seniority service pension benefit by the counting the period of contractual service। ताले contractual service को आमर रिटायरमेंट बेनिफिट हिसाब रे आमे ताकू काउंट करि परिबा सर्विस पीरियड को। पुंजन तो हाई कोर्ट इम्पोज ऑर्डर जोटा कि 23/3/2021 रे थिला only the appellant pay has been protected while their prayer for seniority service and pension benefit by including the contractual period have been rejected जोटा कि रिजेक्टेड कराइला जो पेंशन बेनिफिट को। एटी जदि आम देखा द कोर्ट रिफर टू डिसीजन ऑफ द स्टेट ऑफ एचपी एंड शिला देवी कोर्ट को लेकिन गोटे रेफरेंस नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट wherein it was held that although rule 2G of the pension rule exclude contractual employee from their application किंतु rule 70 apply once such contractual employee is regularized on a later date रे जदि रेगुलर हेले तांको भाई rule 70 लागू एवं तांकर contractual service period टाकू pension benefit ପାଇଁ गणा जिवो। The court therefore held that rule 70 apply once a contractual employee was regularized। Upon regularization the pension rule apply and the rule 70 provide that past service as a contractual employee be considered for calculating pension बोली एटी गुरुत्वपूर्ण राय कहते। द सुप्रीम कोर्ट reiterated that the contractual service period rendered by an employee prior to their regularization must be counted toward payment of pensioner benefit पे ताकू काउंट करा जाइबो। The court partly allowed an appeal against the judgment of the Karnataka High Court which held that where initially appointed जन कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे अपॉइंट होइथिबे सब्सिक्वेंटली पछर से रेगुलर हेबे would not be entitled to seniority service benefit and pension for the period from their contractual service। The court directed to grant of pensioner benefit in accordance with the law of the appellant अनुसार तांको प्रदान करबा पे कहिथिले। द बेंच ऑफ जस्टिस जे अछंती नरसिम्हा जस्टिस बागची in light that clear language of rule 70 of pension rule as well as its interpretation in Shila Devi Supra the contractual service period rendered prior to appellant regularization in 2015 must be
काउंटेड टुआर पेमेंट ऑफ देयर पेंशनर बेनिफिट पे ताकू काउंट करा जीवो इन लाइन विथ द डायरेक्शन इश्यू द शिला देवी executed herein above we directed the respondent bureau Janti Union of India to make immediate step indicate the mode and manner for appellant to exercise their option provided under rule 70 of the pension rule as well as to notify the amount that appellant would have to remit in case they opted for grant of pension under the rule एटी मध्य गुरुत्वपूर्ण निर्देश गोटे दिया तो से अनुसार देखा जदि एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर थिला कर्मचारी मानक पई जदि खबरटी आपको भल लगिला दयकर निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे भूलिए धन्यवाद।